Let's start the things. First of all, we will start with the design pattern. पहले हम डिज़ाइन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे एंड आई विल use a little bit English words also, so someone who don't know Hindi they can also learn from this video. And the purpose of making this video is like to I want to switch the company, and that's why I am preparing myself for to do this or for the switch. So if you want to get help from this video and it help you, it help you to for switching the company, it would be great for me that if my video is helpful for someone like this way. So first of all, we will start with the oops concept and oops design solid principle and design principle. First of all, we will start with the oops and then design patterns, not the design principle. Design patterns, and then we will go to the solid principle. Why we are doing like this? Because it's a principle. It will just tell you that what you should do, but the design pattern will actually implement the principle and done the things. So that's why we will first done the design patterns and then we will learn the solid principle. So first of all, we will understand what the oops. We can also say that it's a design pattern. Okay, it help us to develop the software scalable, feasible, maintainable, provide the modularity, etc. So what's come under the OOPS? First is the classes. What the classes is predefined data type which contain the properties and behavior. And the second definition we can say that it is a blueprint for the object. So predefined data type, like a data type we define. Suppose int, char, boolean, they are a data type. Understand? ये क्या करते हैं, ये उसी टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, है ना? जैसे कोई वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं जिससे पता चलता है कि वो वेरिएबल में कौन सी वैल्यू हम स्टोर करेंगे। वैसे ही जैसे मान लो कोई सा वेरिएबल हो रहा है, अब उसके सामने हमने क्या करा, क्लास कीवर्ड लिखा, तो इससे पता चल गया क्या है कि क्लास है। ठीक है, अब क्लास का कंटेंट करके रखती है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, वेरिएबल हो गया, और बिहेवियर क्या हो गया, मेथड्स हो गए उसके अंदर। और ये दोनों क्या होती है, कंबाइन होती है, और किसके अंदर होती है, क्लासेस के अंदर होती है। तो ये क्या हो गया, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। और क्या और इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्लू भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास इज डेटा टाइप की, इसलिए मैं अभी बताता हूँ आपको। तो सेकंड पे जाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंस्टांस ऑफ क्लास, इस क्लास का इंस्टांस हो जाएगा, यानी कि ये क्लास है। तो ब्लूप्रिंट क्यों बोला गया, ब्लूप्रिंट क्या करता है, सिर्फ आपको बताता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, और कैसे चीज़ें बनाना है, क्या साइज होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही क्लास में सारी चीज़ें डिफाइंड होती है, मगर उसको यूज़ कब कर सकते हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको ब्लूप्रिंट बोला है। ठीक है, और सपोज हमने क्लास बनाई यूज़र की। ठीक है, तो हमने क्या बताया यहाँ पे, किस टाइप की क्लास है, ये यूजर टाइप की क्लास है, मतलब काइंड ऑफ यूजर रिलेटेड फंक्शनलिटी या थिंग्स ये क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। सो अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जाके हम कोड में एक बार देख लेते हैं। कोड है, ठीक है। यहाँ पे हम उप्स कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नया पैकेज। ठीक है, क्लासेस को बताने के लिए तो यहाँ पे जावा क्लास बना देते हैं हम। जावा क्लास का नाम रख देते हैं यूज़र। ओके, यूज़र बना ली। अब यूज़र में हम यहाँ पर रख देते हैं आईडी। आईडी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट आईडी, उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग नेम। स्ट्रिंग नेम, ठीक है। एंड ये हो गया। उसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, नेम, और ये हो गया। ये दो चीज़ हो गई। उसके बाद में ये तो हमने क्लास बना ली, ठीक है, किस टाइप की, यूज़र टाइप की क्लास बनाई है। अब इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये क्या हमारी मेन क्लास हो गई। अब इस मेन क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ये बना लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाएंगे अंदर, हम एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी। यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले। और ये क्या करेगी, डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड जो है वो क्या रिटर्न करेगी, यहाँ पे नाम। और नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो ये नेम रिटर्न करेगी। और इसमें हम कर देंगे
name, return name here. यहाँ पे डिस्प्ले नेम कर देते हैं और इधर हम कर देते हैं इंटीजर डिस्प्ले आईडी। अंडरस्टैंड? एंड यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न आईडी। ये हो गया। और यहाँ पे वी विल क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर आल्सो and then I will show you each use case of it. Understand? And यहाँ पे int id and string name, and then this dot name equal to name, and this dot id equal to id. So our class has been created here, and then we will use it into the main class. So from this class we are calling the class. So here we create what we create here, we create a constructor, and this is the constructor we are calling here of the user class. And what the user class constructor expecting from us, like to put the values which we are getting here. अब यहाँ पे हमने क्या करा है, वी क्रिएटेड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब इधर हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट तो करना पड़ेगा, उसके साथ में उसमें पैरामीटराइज्ड मतलब कि वैल्यू भी पास करना पड़ेगी। तो वैल्यू कौन सी होगी, पहली होगी आईडी, दूसरी होगी नेम, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। कहाँ से, मेन से पास करेंगे। जैसे आईडी हो गई 101 और नेम हो गया मेरा अक्षर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया, उसके बाद में ये जो वैल्यू पास करी है वो यहाँ आएगी। यहाँ आने के बाद में ये क्या है, इसके लोकल, इस क्लास के लोकल वेरिएबल है। अब इसमें वैल्यू पुट करना हमको, तो हम क्या करेंगे, सेम क्लास के वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका, दिस कीवर्ड का। यानी कि इस क्लास की आईडी में हमको ये वाली आईडी जो आ रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यहाँ से आ रही है, उसको पुट कर दो, तो ये पुट जाएगा। अब क्या होगा, इस वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन हो गई। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन मेथड्स का यूज करेंगे, तो हमको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे यूजर डॉट डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले आईडी। ठीक है, अब ये आईडी डिस्प्ले तो कर देगा। अब ये क्या कर रहा है, हमको रिटर्न कर रहा है क्या, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल टू स्टोर दिस वैल्यू विच इज कमिंग फ्रॉम दैम, या फिर वी कैन से दैट द कमिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, sorry, method, and the value will be like string type. So here we will define a variable and user id. Okay, so we store the user id here, and then second is string name, user name, and here we call the user uh, display name. So we stored id and name here, and now we will print it, system.out.println, or maybe print will be okay. So first user id, and user id में we will put the user id, and then यहाँ पे user name, user name, and now we will start this method. Why switch to this method? First of all, there is no problem in this method, and if we try to run this method, what is happening here, why it is redirecting me here. Rechain of the file and the parsing of the okay.
Again, it is sending me to this code. Why it is sending me here, I don't know. But now we will see it. Okay. So it is showing the user ID 101 and username Akshat. Okay. So our code is perfectly run here. And तो यहाँ पर हमने क्या करा, ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी पास द वैल्यू. Okay, so it is a compulsion for us to pass the value because we create a here a parameterized constructor. But if we will not create here, so what we will have to do here is like we have to first of all delete the value from here because we are not passing any values during the creation of the object. So then we have to put it with the help of object. So first of all we use the object.id and then put the id here 102 and then user dot name.